Hi everyone, we are going to discuss pi diagram, its definition, few properties, few rules, and then finally how to draw a pi diagram. All this thing today in this lecture we have to cover, children. So what is pi diagram? As I wrote over here, pi diagram means the given data, whatever the given data, it should be shown in the circular form. The given data should be converted in the circular form. So for that purpose, what we need, we have to convert the data in angular measure. Okay, circle means angular measure theta, then only we can put it in the circle. So we have to convert the given data in the angular measure, that is degree theta. And for converting in degree, we need one formula, and the formula says for finding the central angle, for finding the degree, the formula is given value upon total value into 360. Why we are multiplying by 360? Because the total measure of a circle is 360 degree. Whenever we are finding the percentage, we multiply the given fraction with 100, because the maximum percentage means is always out of 100. Same way, whenever we are converting in degree, the greatest degrees we have in circle is 360, the greatest one, the over total measure of the circle 360. So we are multiplying the given fraction into 360. Okay, so now children, by using this concept, we are going to solve the pi diagram. In practice 6.6 children, you can see the first question. The first question is given that two columns are given to you. The column is in the horizontal form, children. I wrote it in the vertical form. Okay, so even we should write the given horizontal form in the vertical column, children. So I converted it in the vertical column. उसके लिए पहला कॉलम में जो है वो सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है. एज ग्रुप मतलब 20 to 25 ईयर्स. 20 to 25 ईयर्स में कितना पर्सन है हमारे पास? 80. 25 to 30 ईयर्स में कितना पर्सन है? 60. 30 to 35 ईयर्स में कितना पर्सन है? 35. 35 to 40 ईयर्स में कितना पर्सन है हमारे पास? 25. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द total of this frequency, the total number of the second column. Total I got after adding all this, I am getting 200 children. So why I am finding the total, children? Because in the formula you know that for finding the degree we need total value. So this is the total value which we got here. The total value is 100. So now we have to convert this. This is a given data, and we have to convert this given data in degree form. So for converting in degree form, what is the formula, children? Given value, that is 80, upon total value we got 200, multiplied by 360. We are multiplying by 360. You know why we are multiplying. Now do the cancellation. You know the cancellation, children. How to cancel? 0 0. Here also 1 0 will get cancelled. Now you can cancel this 2 with 36. So multiplying 2 with 36, what I am getting? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 2 8s are 16. So final answer that gives me here is 18 into 8. Multiplying is 144 degree. 18 into 8, that is 144 degree. In the same way, here also we are going to do this. Given value, convert this age to 25 to 30 group in central angle in this measure. So given value 60 upon total value, that is 200, into 360. Do the cancellation. 0 0 0 0, then 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 36 into 3 is 108 degree. 108. Similarly here also 35 upon 200 into 360. Do the cancellation, children. This calculation part you can do in rough, and then you can directly multiply. That's not you can do in this way also. Okay, 0 0 cancel. Then 5 7s are and 5 4s are. 5 7s are, 5 4s are. 4 9s are 36. So finally 7 into 9, that is 63 degree. Same way here, 25 out of 200 into 360. Okay, so here also do the cancellation. 0 0 will get cancelled, both goes in 5's table. 5 5's are and 5 4's are.
4 ones are and 4 nines are. So 9 into 5 is, that is 45 degree. So I did the conversion. I got all these degree converted in degree. Now children, let us start to draw the pi diagram. So for drawing the pi diagram children, first we have to draw a circle with any radius. तो तुमने सर्कल बना दिया, सेंटर को हाईलाइट करो. अभी सेंटर को हाईलाइट करने के बाद चिल्ड्रन व्हाट वी विल डू, ड्रॉ रेडियस. तो रेडियस तुम किधर भी बना सकते हो, सर्कल का कोई भी हिस्सा में रेडियस बना सकते हो. तो सपोज आई एम ड्रॉइंग द रेडियस इन दिस वे. आई ड्रॉन द रेडियस इन दिस. आई एम ड्रॉइंग विथ पेन सो दैट विथ पेंसिल द डायग्राम वोंट बी क्लियर फॉर यू पीपल. लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है चिल्ड्रन. हाँ, सो लाइक दिस चिल्ड्रन आई ड्रॉन विद रेडियस. अभी रेडियस बनाने के बाद आई विल टेक माई प्रोटेक्टर चिल्ड्रन एंड देन आई विल कीप माई प्रोटेक्टर ओवर हियर. हाउ टू कीप द प्रोटेक्टर दैट यू ऑल नो. Center with the center, and the line of the protector should coincide the radius of the given information. So here children, this is the thing. See, now you seen that we can see that my radius is going this side. तो we are going to start with this side 0. प्रोटेक्टर का दोनों साइड में 0 रहता है, ये आपको पता है, ये सब बेसिक थिंग है. फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा रेडियस इस तरफ जा रहा है ना, तो ये साइड का 0 से स्टार्ट कर रहा है. ओके, और ये साइड का 0 को फॉलो करो. कब तक फॉलो करेगा, जब तक मुझे 144 डिग्री नहीं मिल रहा है. सो व्हाट विल आई डू चिल्ड्रन, आई विल स्टार्ट विद 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 144. तो जैसा 140 मिला, देखो ये 130 है, यहाँ पर 120, 130, 140. 140 मतलब 40 के बाद 4 लाइन, 1 2 3 4. तो ये हो गया 144 चिल्ड्रन. 140 के बाद 4 लाइन. सी दिस इज़ 90. इसके बाद जो आएगा ये है 100, 110, 120, 130, 140 एंड 40 के बाद 4 लाइन, 144. सो once you got that 4 line, what you will do children, join this with the help of the circle. But as I said, no need to draw till, no need to join till the we have to just extend this, we have to just extend this till the other end touches the circumference of the circle. ध्यान पे दो, इसको बड़ा नहीं करना है. तो ये हो गया अपना 144 डिग्री. और ये 144 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ग्रुप 20 to 25. ये भी मेंशन करके रखो. Now children, I got 2 radius. You can see here also 1 radius, here also 1 radius. Now it's up to you. Either you can keep this like this on this radius, ऐसा रखो और पॉइंट प्लॉट करो, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करो, या फिर इसको तुम ऐसा रखो. कोई भी रेडियस को फॉलो करो, इट्स अप टू यू. कोई भी रेडियस, ये रेडियस को फॉलो करना है तो ये रेडियस को फॉलो करो, या फिर ये रेडियस को फॉलो करना है तो ये. सपोज आई एम फॉलोइंग दिस रेडियस, तो व्हाट विल आई डू, कीप द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन माई सेंटर and the radius should coincide the protector line like this. exactly coincide करो. उसके बाद तुम्हारा रेडियस इस तरफ जा रहा है ना, तो ये साइड का 0 से स्टार्ट करो. देखो 0 इधर है अभी, और मुझे क्या चाहिए, 108 चाहिए. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ये 105 हो गया. 106, 107, ये 108. सी दिस वन. सो बट आई वोंट, सो इसको एक्सटेंड करना है हमको. हाउ लॉन्ग आई विल एक्सटेंड, सी दिस इज़ द पॉइंट. तो हम लोग पहले यहाँ तक, जहाँ पे हमारा सर्कल को टच हो रहा है वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे. सो दिस इज़ योर 108 डिग्री. डोंट फॉरगेट टू राइट द डिग्री एज वेल एज द टाइटल विच इट रिप्रेजेंट. और इसका टाइटल है 25 to 30. नाउ अगेन चिल्ड्रन, आई हैव 2 रेडियस. एज आई सेड, यू कैन फॉलो एनी 1 रेडियस. तो ज़रूरी नहीं कि वही लाइन में आने के 144 के बाद 108 आना चाहिए, 108 के बाद 63 आना चाहिए. अगर तुमने 45 पहला बनाया तो भी चलेगा चिल्ड्रन. इस यहाँ पे इसमें वही सीक्वेंस में आना कोई ज़रूरी नहीं है. उसके बाद मुझे चाहिए 63 डिग्री. अगेन मैं यही रेडियस को फॉलो करूँ, तो यही रेडियस को फॉलो कर रहा, तो मेरा प्रोटेक्टर का सेंटर और आपका सर्कल का सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए लाइक दिस. एंड द रेडियस विल बी कोइंसाइडिंग द प्रोटेक्टर लाइन. Now follow this children, the 0 comes over here, 0 falls here. So मुझे कब तक चाहिए, 63 डिग्री चाहिए. तो यही 0 को फॉलो करो. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 के बाद 3 लाइन, 61, 62, 63. 60 के बाद 3 लाइन. So
drawing this. So I will write 63 degree और एच उसका टाइटल क्या है 30 to 35, 30 to 35. देन अभी लास्ट वाला तुम चेक करो, लास्ट वाला तुम बिना ब्लाइंडली यू कैन राइट विच व्हाट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ क्या रहेगा 45 डिग्री ही रहेगा और उसका मेजर क्या रहेगा 30. ये कौन सा टाइटल है 35 to 40. सो दिस इज द पाई डिक्लेरेंट, सो दिस इज द पाई डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दिस गिवन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा पाई डायग्राम. So this was the first sum, children. I hope it is very much clear to all of you. See, if any doubt, you can repeat this video and can see. Similarly, one more sum we will do. Same way second sum I am doing, children. See, English, again the subject, two columns are given to me. I wrote the two columns in the vertical form. It is given in the horizontal form in a textbook, but we are writing in the vertical form. We are the English, what is given over, the subject and the marks are given. In English, the child is getting 50 mark, Marathi 70, Science 80, Maths 90, Social Science 60, Hindi 50. So the total mark the child scored is 400. Okay. Now we have to find the pi. We have to draw the pi diagram, and for drawing the pi diagram, we have to convert the given data in degree. And for converting the given data in degree, we have to follow the formula. The formula says given value, that is 50, upon total value, that is 400, into 360. We are multiplying by 360 because total measure of circle is 360. So do the cancellation. 0 0 0 0 4 1s are 4 9s are, then 5 9s are is 45 degree. Similarly, 70 out of 400 given value upon total value into 360. Do the cancellation. 0 0 0 0 4 1s are and 4 9s are, 7 9s are 63 degree. Again same way, given value upon total value into 360. Same way, 0 0 0 0 4 1s are 4 9s are, 8 9s are 72 degree. 72 degree. Given value, total value into 360. Four nines are, 9 9s are 81 degree. Similarly, given value, total value into 360. 0 0 0 0 4 1s are 4 9s are, so 6 9s are 54 degree. I hope my calculations are right now, children. Oh, it's right, 4 1s are 4 9s are. Okay. Similarly, given value, total value and 360. 0 0 0 0 4 1s are 4 9s are, 45 degree. So this is ready. Now we are going to draw this. So I already drawn the circle. I said with any measurement you can draw the circle, children. Highlight the center, don't forget to highlight the center. Okay, we will highlight the center, draw the radius. Radius anywhere you can do. Suppose I am drawing the radius in this way this time. Radius तुम बस सर्कल में किधर भी रेडियस बना सकते हो. मैंने इस बार रेडियस ऐसा सेलेक्ट किया है. अभी नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर यूज़ करके फर्स्ट मेजर फाइंड आउट. सो प्रोटेक्टर लेके we'll keep the protector like this. Your protector should coincide this, children. तो जैसा मैंने बताया तुम्हारा सेंटर प्रोटेक्टर का सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड होना. दिस इज द प्रोटेक्टर, दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज द प्रोटेक्टर सेंटर. They are coinciding. The radius should coincide with the side, with the line given, line of the protector. Now your radius is moving this side, so start with this 0 0 10 20 30 40 40 के बाद 45. Now what you will do, join this.
मेंशन दैट 45 डिग्री, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश. अगेन आई हैव टू रेडियस, सो एनीवे आई एम कीपिंग लाइक दिस. सपोज अगेन आई एम कीपिंग लाइक दिस. ये हो गया सेंटर, ये इस सेंटर सेट में सेंटर कोइंसाइड होना चाहिए रेडियस के साथ. 0 10 20 30 40 50, 0 10 20 30 40 50 60, 60 के बाद 3 लाइन, 63 डिग्री. join this till circumference you will join children. 63 डिग्री. और ये हो गया क्या है, ये मराठी. दिस रिप्रेजेंट मराठी. देन अगेन आई एम कीपिंग द प्रोटेक्टर. okay, again your radius is moving this side, so start with this 0, and how long you will do, 72 degree. So 0 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 2 लाइन, 72. So I hope the diagram is clear for you, this pi diagram. Hmm. 72 degree sines. ठीक है. And again I have two radius, so again you can keep it on any one of the radius. I kept radius in this way, I kept this, I selected this side radius, so your line is radius is moving this side na, so start with this side 0. okay, so next is 81 degree. तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 के बाद एक लाइन, 81. 81 degree, and I will write here max. and then at last जो बचा हुआ और एक है social science. social science is 54 degree. so again center and center coincide, radius and radius coincide, and 54 degree means, see I selected this radius na, so your radius is moving this side, so start from this 0 10 20 30 40 50, 50 के बाद 4 लाइन, 54. degree, and it is social science. and then the leftover it will be the remaining last subject, that is 45 degree, which stands for Hindi. So this is the pi diagram. So this is the pi diagram for the second sum. Thank you children.